सभी को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से और बात करेंगे आज आप लोगों के साथ Q3 रिजल्ट के बारे में। Q3 रिजल्ट हाईलाइट कर दिया कंपनी ने और लूरास लैब्स KVB पोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ अदानी ग्रीन श्रीराम फाइनेंस सिप्ला इंडिगो सी शार्प डिक्लाइंस इन गोदरेज कंज्यूमर इन फोकस। Q3 result today 23 Jan 2026 highlight find all the latest Q3 result 2026 updates. Q3 result today 23 Jan 2026 highlight find all the latest Q3 result 2026 updates of the JSW Steel Shriram Finance Bharat Petroleum Corporation Adani Green Energy Godrej Consumer Product Cipla JSW Energy Q3 result today key highlighted. Adani Green Energy consolidated net profit for the quarter in the December 2025 slumps to 5 crore. Selling Shriram Finance Q3 profit declines 29% YoY. Cipla standalone net profit for the quarter in the December 2025 at 616.88 crore down. Or Godrej Consumer Q3 profit flat revenue race on India Africa growth. Laurus Labs Q3 net profit surged 174% to 252 crore. India Cement Q3 losses at 2.67 crore. Revenue up 18.60% to 1,114.3 crore. Crore Vipas Bank Q3 financial year 2026 net profit jumps 39% to 690 crore. IndusInd Bank Q3 net profit drops 90% on MFI squeeze aim or the system level growth in financial year 2027. दोस्तों आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है जो Q3 रिजल्ट के बारे में और Q3 रिजल्ट हाईलाइट कर दिया कंपनी ने जो लूरास लैब्स KVB पोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ अदानी ग्रीन श्रीराम फाइनेंस सिप्ला इंडिगो सी शार्प डिक्लाइंस IndusInd गोदरेज कंज्यूमर इन फोकस जो कंपनी है कंपनी ने जो दिया रिजल्ट डिस्कस कर दिया और आप लोगों ने देखा जो प्रॉफिट और मार्जिन कितना हुआ और आप लोगों ने देख पा रहे हैं जो मार्जिन प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी के आप लोगों ने देख पा रहे हैं कंपनी का जो मार्जिन आया है दिसंबर का रिजल्ट इस बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देख पा रहे हैं जो मार्केट का जो हाल जो कंपनी ने प्रॉफिट परसेंट किया है और Q3 रिजल्ट के बारे में आप लोगों ने देख पा रहे हैं सिप्ला श्रीराम फाइनेंस कोटक महिंद्रा बैंक और अदर्स कंपनी ने Q3 रिजल्ट डिस्कस कर दिया।